Hello friends, नमस्कार दोस्तों. I hope you all are doing well. ट्रेडिंग वैसे इन्वेस्टिंग अच्छा चल रहा है, चलना ही चाहिए if you have been a regular watcher of my videos, क्योंकि broadly हम लोग सही दिशा में हैं so far thankfully and money is flowing in. तो ये जो वीडियो, इसमें मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब रह सकता है. डोंट माइंड दैट बिकॉज आई हैव सम लुक्स लाइक आई मिसप्लेस्ड माय कैमरा and I'm still searching for it to the different places I have been. So you have to mind that. But I don't think मेरा स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगा. स्क्रीन आप लोगों को फुल्ली विजुअलाइज होना चाहिए. दिस इज कॉपर, where I'm seeing different commodities are starting to behave differently. Aluminium is where I can see strength, whereas other commodities are in more declining mode. Copper, I remain bearish. I remain short in copper. It is going lower. Next, जो important level है, this is I think where copper is heading. Just a moment. Now I have to draw a line. Let me bring the line chart. This is it. तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट पास आ रहा है. दिस इज 760. तो ये जो जोन बन रहा है 754, this is a major support for copper. I do not think that it is going to break this levels very easily, but this is very likely where seems to be copper is heading. So let's not go where it's heading. We'll only focus, we'll focus रहेंगे कि जो हो रहा है और होने को दिख रहा है कि कॉपर इज बियरिश, और मैं बियरिश ही मेंटेन करूंगा सौदा. एंड आई आर्ज यू टू मेंटेन द बियरिश आउटलुक, क्योंकि मुझे यहाँ पे बुलिश नहीं दिख रहे हैं कॉपर. इसके अलावा आई टेक अ लुक एट द ग्लोबल कमोडिटी का इंडेक्स 24 कमोडिटीज. व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज इसमें भी हम लोग इन्वेस्ट और ट्रेडिंग ऑन द बाई साइड, सेल साइड नहीं बट बाई साइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ग्लोबल कमोडिटी एज अ होल वाया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोबल कमोडिटीज. वुड यू बाय? आई डोंट नो, आई वोंट बाय. मैं बाय नहीं करूंगा. नीचे जो दिखा रहा है ये मोमेंटम का बुल पावर बियर पावर दिखा रहा है फ्रॉम RSI-X. और जो लोग नहीं जानते ये क्या है, दिस इज माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, जिसको जिन जिनको एक्सेस दिया गया है, आप इनवाइट ओनली में जाके विद SD रेनबो वेव वर्जन 1 एंड SD RSI-X, ये दो लगा के यू कैन क्रिएट दिस फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप. Now we have taken a look at copper. Let's look at global commodities 24. ये GSG, S&P, GSCI. We have taken a look at 24 commodities. USCI के जरिए हम लोग कमोडिटी को देखेंगे जो फॉरवर्ड कार्व वाइज पॉजिटिव है, या फंडामेंटली बोला जाए पार्शियल, मतलब एक टाइप ऑफ फंडामेंटल के हिसाब से जो भी कमोडिटीज पॉजिटिव होता है यूएससीआई में वो जाता है. ओवरऑल यूएससीआई का जो मोमेंटम दिख रहा है, मोमेंटम स्ट्रक्चर, आई डोंट नो व्हाई द नेट शुड बी अ बिट स्लो. इट हैज कम. तो ये जो यूएससीआई भी बियरिश, तो इमीडिएटली कमोडिटी में मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहा हूं. I'm not thinking about investments at all. Then we have DBB, base metals. Then we have agriculture. Is showing some signs of comeback, but I don't have a full green candle जो मुझे बोले कि मुझे invest करना चाहिए. ऐसा कुछ है नहीं अभी यहाँ पे. So agriculture not good, base metals not good, overall commodities ये है जो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे in terms of investment on the buy side, long के side. Rather commodities are looking for trading, which is more of MCX futures या और भी तरीका है internationally. So उसके जरिए trading ही सही लग रहा है, that is copper is going lower. And the one that is trying to make a comeback हो रहा है बहुत early comeback, that is aluminium. Aluminium I made a get a buy signal soon. मेरा और alerts place है, आप alert में जाके rainbow buy alert लगा दीजिए. It may fail, so I'll not. First I need a full green candle is the minimum.
So I'll place a trial order to start with. As the background turns green, means short-term trend becomes in my favor. Then I'll add more quantity. Empty line will be one of my target along with this flat zone, 227. So aluminium is forming a base. We may get a buy signal in future. So far it's not bearish and it's asking me to do nothing. क्योंकि कैंडल ना तो ग्रीन है ना तो रेड है, तो मिक्स कैंडल जब है हम लोग कुछ नहीं कर सकते. टू बाय आई नीड अ फुल ग्रीन कैंडल, टू सेल आई नीड अ फुल रेड कैंडल. Then I'm looking at zinc. Has been bearish. बहुत ही बढ़िया ब्रेक हुआ है. I'm look like it's gonna drop further. 234 is a very likely area, but पहले जैसा जो प्रेशर डाउनसाइड प्रेशर वो दिख नहीं रहा है. We may see gradual down move. अभी ये जो स्टॉप लॉस सजेस्टेड है यहाँ पे, इसको होल्ड करके इसको लेके I'll continue with this trade and I'll see how big it can go, how bigger drop possible है. बाई के बारे में एज पर डेली चार्ट के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहे. सम अदर टाइम फ्रेम में से डिफरेंट थिंग, बट अभी डेली के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूं. सो डेली के हिसाब से आई डोंट थिंक एनी काइंड ऑफ सिग्नल हैज कम. लेड को एक बार देखेंगे व्हाट्स हैपनिंग. लेड इज लार्जली आई डोंट लाइक टू डू विद द लेड. इट इज समवॉट बेयरिश. वही रेंज मेंटेन कर रहा है लेड. जो रेंज हम लोग बोले थे अपर साइड दिस, लोअर साइड दिस कुड बी द बेस. 100 सो फार अभी तक उतना गया नहीं है. लेड अराउंड 182 के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, बट दिस इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी. बट ये रेंज में ही लेड इज लाइकली टू मेंटेन. बट लेड में इसीलिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड. एंड निकल वी डू नॉट ट्रेड इन MCX. Now, when it comes to gold, silver, I need to look at the international chart. So, international chart में silver में I'm bearish, but this is not कोई surprise news नहीं है. जो लोग मेरा regular video देखते हैं, you know that I'm bearish. और bearish होने का reason भी है काफी. मेरा एक target जो अब post किया था 26.4 के आसपास, very likely will go. It already reached, but लग रहा है और थोड़ा नीचे जाने का possibility. ये जो टर्न अराउंड हो रहा है उसका मॉनिटरिंग. इट विल बी विजिबल. एग्जिट क्या क्या होगा. दिस ये जो ग्रीन सॉक्स दिख रहे हैं, once they appear, if I see any kind of spike, you know, candle का upper weak shadow, any kind of spike देखने के लिए I'll hide and bring the original candles. If the current candle has major, some spikes are there, so one can track partial profitability, which is definitely recommended, and to hold on to that trade to it can drop or decline. Bigger decline हो सकता है. So बाकी trade को hold करेंगे. Let's look at gold. Gold V is not good. It is bears are dominating. एक्सेल सिग्नल भी आया है कल. bears are broadly dominating in gold, but this is a range, very tight range. Upper side we have 2461. This flat line will act as a base जहां पे gold actually है. Even if gold drops a bit, it is 2362 नीचे की तरफ, and this is where support is coming up. 2362, 2355, ये सब जगह पे गोल्ड का सपोर्ट आ रहा है इन द डॉलर. इफ आई लुक एट MCX का गोल्ड, इंटरनेशनल ऑलवेज ज्यादा फोकस रहना चाहिए फॉर ट्रेडिंग. इंटरनेशनल along with MCX you can one can consult definitely, but MCX का जो हेवी सेलिंग दिख रहा है, सेल ऑफ, it's rather has to do with the duty cut which was not related to the global, Indian specific. So MCX price got affected. So this chart got skewed. तो इसीलिए इंटरनेशनल चार्ट देखना ही सही होगा. So let's look at the crude oil. This is the international crude oil. So international crude oil में this is the WTI. All I'm seeing is the bearish. I remain bearish.
एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं, एंड दिस इज द रीजन टू डू रिस्क रिडक्शन, मतलब क्वांटिटी कम करना चाहिए, इज द कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। 50% से ज्यादा 64% हो चुका है। ये तीनों को मिला के 100 होने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, इट्स अ प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटी। हर एक को अलग से कैलकुलेट किया जा रहा है सो दैट ईच वन कैन रीच मैक्सिमम 100। सो कंसोलिडेशन प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटी 60 से ज्यादा है, मतलब हाईली मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, यू मे नॉट बी एबल टू सी सम प्रॉफिट और सी सम बाउंस बैक एज वेल। बट अभी भी मैं क्रूड ऑयल में आई एम नॉट बुलिश, आई रिमेन बियरिश ऑन क्रूड ऑयल, बट honestly I did not expect this big a decline when it originally started। जब यहां से सेल ऑफ चालू हुआ था, ये सेल सिग्नल आया था 12th of July को, I originally did not thought कि crude oil will drop this much and this fast। In fact, I thought these areas are going to provide major support to crude oil, which obviously it failed, and that showed how weak the crude oil is। सो दिस इज, इसीलिए प्रेडिक्ट करने से बेहतर है मार्केट को फॉलो करना, और मार्केट को फॉलो करते हुए मुझे दिख रहा है कि अभी भी सौदा बियरिश ही रखना चाहिए, बुलिश नहीं। लास्ट हम लोग देख रहे हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज मेकिंग अ बेस, नॉट बेस एग्जैक्टली, अब डाइवर्जेंस दिख रहा है, रादर मोमेंटम मोर देन अ बेस। बेस एक फ्लैट होगा बट बेस नहीं बना रहा है, इट्स मोर ऑफ अ डाइवर्जेंस चल रहा है, डाइवर्ज ग्रेजुअल नीचे जाना, उसके बाद ही करेक्शन। सो अच्छा मौका बेचने का हैज गॉन अवे। सेल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज 32। सो यहाँ पे नेचुरल गैस में भी एक फ्यूचर में कमबैक आ सकता है, देयर कुड बी ए न्यू कमबैक इन द नेचुरल गैस, बट वील हैव टू वेट टिल दैट मोमेंट कि गेट अ बाय सिग्नल ऑपोजिट ऑफ दिस रेड डॉट। ये जो रेड डॉट सेल सिग्नल है, इसका ऑपोजिट एक बाय सिग्नल आएगा, and we'll get a full green candle to buy natural gas। Currently natural gas is not at all good। only कोई भी मेजर काउंटर मुझे बाय के साइड नहीं दिख रहा है। Majority commodities are still bearish, some future opportunities are getting built up, created, that is aluminum, as well as I can see natural gas is consolidating। तो इसके ऊपर मैं नजर रखूंगा, और वही याद रखूंगा कि ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है। अगर हम लोग ट्रेड नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग गुड ट्रेड, वी कैन नॉट बी एग्रेसिव, तो हम लोग एग्रेसिव होंगे नहीं, जरूरत नहीं है उसका करने का। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अगर आई होप दिस वीडियो आपको पसंद आया, अगर हेल्प हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।